Hey guys, welcome back to my channel Life Sciences with Aces. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's lecture is all about immunoglobulin, a part of immunology which means antibody. So let's proceed. Let's see definition. The immunoglobulins are the heterogeneous population of antibodies that interact specifically with antigen that elicited their formation. And the immunoglobulin are the antibodies or antigen binding glycoprotein are synthesized exclusively by B cells in billions of forms with each different amino acid sequence with different antigen binding site collectively called immunoglobulin. These are the definitions of immunoglobulin, and this immunoglobulin is synthesized in B cells, and these are the different sequence of amino acids. Here you can see different sequence of amino acid, and this interacts with antigen and bind with them and form antigen antibody reaction there. So occurrence where it is found, immunoglobulins are present in high concentration in plasma और serum. बॉडी के जो प्लाज्मा या फिर जो सेरम होते हैं उसमें बहुत सारे immunoglobulins पाए जाते हैं. And immunoglobulins are present on B cell membrane and secreted by plasma cells, constitute 20% of total plasma protein by weight, and they can be found in various fluids like our tears, milk, urine, nasal, mucus, sweat, etc. And there are various forms of immunoglobulins in our body. This can be expressed in two forms. एक जो होते हैं जो membrane bound immunoglobulins होते हैं जो हमारी membrane में bound होते हैं, और एक क्या होता है secretory immunoglobulins जो कि सिर्फ प्लाज्मा, सेरम, टिश्यू फ्लूइड ये सब में पाए जाते हैं. So this membrane bound immunoglobulins are the naive B cells. Express membrane immunoglobulins MIG is membrane immunoglobulin which are attached to the surface of B cell and act as antigen receptor or B cell receptor. And each B cell has about 10 to the power 5 such antibodies in its membrane surface. And initially B cell express IgM and IgD on surface. जो B cell होते हैं वो पहले तो हमारा IgM या फिर IgD को अंदर सरफेस प्रेजेंट करते हैं. एंड secretory immunoglobulins क्या होते हैं? They are circulating soluble forms of immunoglobulins found in plasma, serum or tissue fluids. ये एक्चुअली होते क्या है, दे आर सर्कुलेटिंग सॉल्युबल फॉर्म ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली, जो बॉडी में घूमते रहते हैं. हाँ, क्योंकि देखो हमारे प्लाज्मा हो, सेरम हो और टिश्यू फ्लूइड्स हो वो हर जगह में होते हैं, तो ये सर्कुलेटिंग फॉर्म में होते हैं. और जब भी आता है कोई भी हमारा एंटीजन, देन वो मतलब क्या हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं. And when a naive or memory B cell bind with membrane immunoglobulin, it initiates cell proliferation. सेल का proliferation होता है, development होता है, differentiation होता है, to produce either a clone or plasma cells or memory cells. And each clone of plasma cells जो भी कुछ हमारा clone वहाँ पे formation हुए हैं, they secrete homogeneous antibodies which have same specificity for antigen that is identical to original surface receptor of B cells. मतलब एक को देख लेते हैं दूसरी मतलब उसके हिसाब से दूसरे बना लेते हैं. एंड अभी आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. सो ये इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ये आइदर एक वाई शेप और एक टी शेप मॉलिक्यूल होते हैं, और इसको रोडनी पोर्टर जो है इन 1962 proposed a basic structure for immunoglobulin which is common to all classes of immunoglobulin. बहुत जो भी जितने भी क्लास होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के, उसमें हर क्लास में ये कॉमन होते हैं. And the basic structural unit of immunoglobulin is Y-shaped or T-shaped molecule consists of a tail, that is stalk, and two arms or limbs joined by a flexible hinge region. So here you can see this is the hinge region of the antibody, and these are the antigen binding site to which antigen will bind, and this place is called as paratope. And इधर जो भी बायोलॉजिकली एक्टिविटी होते हैं इसमें ही होते हैं.
एंड ये होता है हमारा आर्म, एंड दिस इज योर टेल रीजन। एंड इधर हम अच्छे से देख लेते हैं। सो ये टेल क्या होता है, देखिए पहले, टेल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएट्स अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी सच एज एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फागोसाइटिक सेल्स। जो भी हमारा फागोसाइटिक सेल या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, ये टेल उसे एक्टिवेट करता है। एंड आर्म्स, it is the tip of each arm of immunoglobulin contain the antigen binding site paratope. This is the main part of immunoglobulin. This contains the antigen binding site paratope, into which antigen will come and bind, or this immunoglobulin will go and bind with that antigen. And they have two antigen binding site and they are described as bivalent. इसमें देखिए आपका दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एक ये वाला, this one, and another is this one. This is the antigen binding site which is called as paratope, and it has two binding site, therefore it is called as bivalent. Then comes our hinge region. This flexible hinge region of immunoglobulins allow the distance between two arms and increases the efficiency of antigen binding and cross linking. जो hinge region होते हैं वो एंटीजन का मतलब इफिशियंसी को इंक्रीज करते हैं, एंटीजन बाइंडिंग को आसान कर देते हैं। जो hinge region, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का एक अच्छा खासा पार्ट है जो ये आर्म और टेल रीजन को जॉइंट करके रखता है। फिर क्या आता है हमारा, Gerald Edelman and Rodney Porter found the basic unit of immunoglobulin consists of four polypeptide chains, that is light chain, and two identical heavy chains held together by disulfide bonds. देखिए यहाँ पे जो होता है, this VL is the light chain, and this is the variable region of light chain, and this CL is the constant region of light chain, and this V again VH is the variable region of heavy chain, and CH1, CH2, CH3, CH4, whatever is there, is the constant region of heavy chains. And this it has a light chain hypervariable region in this place, and this is the light chain and this is the heavy chain. This upper part is the light chain and lower part is the heavy chain, as you can see. And this heavy chain have also hyper variable region. Here you can see these are the hyper variable regions of heavy chain, and this is the hinge portion showing here, and hinge portion is also joined by a interchain disulfide bonds. So क्या होते हैं हमारा sorry, this basic monomeric heterodimer structure is H2L2 is common in all classes of immunoglobulins. Actually हमारा 5 classes of immunoglobulins होते हैं, जो हमारा IgA, IgD, IgE, IgG and IgM। ये जो 5 टाइप के 5 क्लास के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जो सब में कॉमन है, वो एक हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर होता है जो H2L2, and this is common in all types of all classes of immunoglobulins, and the basic four chain structure is functional at quaternary level, and this is it is a heterodimer consisting of two identical light chain each above 220 amino acids residue of molecular weight 25,000 डाल्टन। जो लाइट चेन होते हैं उसमें 220 अमीनो एसिड्स होते हैं और इसकी मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 डाल्टन, 25,000 डाल्टन्स, एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन each usually containing 440 amino acids residue, एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होते हैं 50,000 डाल्टन। जो लाइट चेन होते हैं उसका क्या होता है 25,000 डाल्टन, और जो हेवी चेन होते हैं उसका वेट कितना होता है 50,000 डाल्टन, एंड ईच लाइट चेन इज बाउंड टू हेवी चेन बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोई भी मतलब हमारा लाइट चेन हेवी चेन जॉइंट जहाँ पे भी कर रहा है वहाँ पे सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड की ही यूज होता है। देन क्या आता है हमारा, each L chain consists of one variable and one constant. See here you can see it's contain one variable, here it is containing one variable, and here is one constant region. But in heavy chains it is मतलब वेरिएबल रीजन एक होते हैं, जो कांस्टेंट रीजन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब 4-5 टाइप CH1, here again CH2, CH3, CH4, बहुत सारे ऐसे होते हैं।
तो जो भी हमारा ये याद रखना है कि कांस्टेंट रीजन में सिर्फ दो होते हैं, जो वेरिएबल लाइट चेन एंड कांस्टेंट वेरिएबल लाइट पार्ट चेन पार्ट एंड कांस्टेंट लाइट चेन। एंड ये हेवी चेन जो होते हैं इसके कांस्टेंट रीजन 3 होते हैं और वेरिएबल रीजन 1 होते हैं। Each L chain consists of one variable and one constant domain, while most H chain consists of one variable domain VH and 3 or 4 constant domains CH1, CH2, CH3 and CH4 based on antibody class। ये जो constant domain होते हैं, कोई भी अगर antibody class में change हो तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारी ये light chain क्या होता है। The L chain has amino acid amino terminal, that is NH2 terminal, and carboxy terminal is COOH, that is carboxylic group। ये carboxylic terminal इनमें होते हैं। And N terminal half of L chain consists of a variable region at the C terminal half has a constant region। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो सॉरी N terminal जो है वहाँ पे दिस इज N terminal और यहाँ पे वेरिएबल रीजन पाए जाते हैं। एंड ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रीजन्स यहाँ पे हमारा जो पाए जाते हैं हमारा सी कार्बोक्सी टर्मिनल एंड दिस दैट इज द कार्बोक्सी टर्मिनल एंड ऑल चेन आर ऑफ टू टाइप्स, इट्स wrongly written। All chain are of two types, that is either kappa or lambda, but never both। Either they will contain kappa or they will contain lambda, but they don't contain both at a time। And the immunoglobulins having kappa chain is called K type, and the immunoglobulins having lambda chain is called L type। And जो humans होते हैं उसमें 60% immunoglobulins are of K type and 40% are of L type। बट इन माइस क्या होते हैं, के टाइप जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, दैट इज 95%, एंड एल टाइप इज ओनली 5%। And next is our heavy chain। Each H chain has a 5 different types of that is immunoglobulin on the basis of different sequence of constant region। जो constant region के sequence होते हैं उसके हिसाब से ये 5 class of immunoglobulins होते हैं। This is alpha chain in IgA, immunoglobulin A, delta chain in IgD, and epsilon chain in IgE, and gamma chain in IgG, and last one is mu chain in IgM। These are these IgA to IgA, IgD, IgE, IgG, and IgM. These are the class of immunoglobulins। And these different types of heavy chain, these 5 different types of heavy chain is called as isotypes। ये जो 5 different types of heavy chain पाए जाते हैं immunoglobulin में उसे बोलते हैं isotypes। And heavy chain of a given antibody molecule determine the class of that antibody। जो भी ये class होते हैं इसके हिसाब से, ये heavy chain के हिसाब से हम ये class decide कर सकते हैं कि वो कौन सी class का immunoglobulin है। And thus each individual offers a specific species makes all heavy chain, but in any one antibody molecule both chains are identical, thus an antibody molecule both chains are identical like your lambda 2 gamma 2। And minor differences in amino acid sequence of alpha and gamma heavy chain leads to further classification of heavy chain into subclass। And in humans there are two subclasses of alpha heavy chain, that is alpha 1 and alpha 2, and gamma का heavy chain जो है उसमें 4 पाए जाते हैं, 4 classes, that is gamma 1, gamma 2, gamma 3 and gamma 4। then क्या आता है हमारा antigen binding site, that is paratope। The amino acid sequence data reveal that VL, this variable region of L chain, and VH domains are not uniformly variable. Rather, each variable domain consists of 3 hypervariable regions. Here you have said is what is hypervariable region? See, what's that? See, this one is light chain hypervariable region and this is heavy chain hypervariable region। ये जो हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं तो इसमें क्या होता है हमारा यहीं पे हमारा एंड सी दे हैव द बाइंडिंग साइट पैराटोप से दे शुड हैव अ प्रॉपर शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। rather each variable domain consists of 3 small hypervariable regions, that is HBRs, it's the short form, and 4 relatively constant framework regions,
that is apheresis. In 1970, Elvin Corbett proposed three HBRs, that is hypervariable region of variable region of light chain domain, and three variable region of heavy chain domains are brought together to form a paratop. ये दोनों को मिला के जैसे बनते हैं, क्योंकि पाराटॉप जो होते हैं वो इधर से ऐसा करके होते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल रीजन्स ऑफ लाइट चेन एंड हेवी चेन मिला के हमारा होता है पाराटॉप. तो नेक्स्ट आता है हमारा, सिंस पाराटॉप इज कम्प्लीमेंटरी टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ एपिटोप ऑफ एचबीआरस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कम्प्लीमेंटरी डिटरमिनिंग रीजंस. ये एपिटोप जो पाराटॉप के साथ बाइंड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं, ये हमारा होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, दैट इज एपिटोप, एंड हमारा जो पाराटॉप होता है इसे बाइंड करने के लिए कुछ इस तरफ के होते हैं, जैसे वो पकड़ के रखना होता है, हमारा लॉक एंड की सिस्टम जैसे नहीं होता है, वैसा पैराटोप एंड बाइंड दैट्स आवर एपिटोप, उसमें हमारा यही सिस्टम काम करता है. देन आता है हमारा फ्रैगमेंट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कितने फ्रैगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वी कैन सी हियर दिस लिमिटेड प्रोटियोलाइसिस विद एंजाइम पाबाइन. तो इसमें क्या है, दिस आवर पोर्टर व्हेन ट्रीटेड इम्यूनोग्लोबुलिन विद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैपाइन होता है उसको इम्यूनोग्लोबिन को क्लीव करने के लिए वो यूज़ किए, एंड वो कितना फ्रैगमेंट हमारा आया, 2 आइडेंटिकल फैब फ्रैगमेंट, एंड थर्ड वन इज द एफसी फ्रैगमेंट. तो ये फैब फ्रैगमेंट क्या होता है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग. सी हियर यू कैन सी each fab fragment has a single antigen binding site called paratop at one end. इधर paratop पाए जाते हैं, इधर ये जगह आपको दिखा रहा है, ये आपका paratop फाइंड किए जाते हैं यहाँ पे, and part of each chain present in the fab is known as FD piece, उसे FD piece बोला जाता है. देन क्या होता है, हमारा आता है एप्सी फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल. इट लैक्स, यहाँ पे क्या हम देखते हैं, 2 आइडेंटिकल फैब फ्रैगमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं ये दो होते हैं फ्रैगमेंट्स, एंड ये जो होते हैं फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, जो एप्सी फ्रैगमेंट होते हैं. एंड इट लैक्स द एबिलिटी टू बाइंड विद एंटीजन, ये कोई भी एंटीजन के साथ हमारा बाइंड नहीं करता है. एंटीजन बाइंड कौन करता है, ये वाला जगह में. एंड इट इज नेम सो बिकॉज इट इज रेडिली क्रिस्टलाइज, जो भी कोल्ड स्टोरेज में आता है ये क्रिस्टलाइज हो जाता है. एंड एप्सी फ्रैगमेंट इज फाउंड टू कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड मीडिएट द फॉलोइंग फंक्शंस. एप्सी रीजन डिग्रानुलेशन ऑफ मस्ट सेल में इन्वॉल्व होता है, एंड डिटरमाइंस द secretory ability of immunoglobulin molecule, and determine the passes of immunoglobulins across placenta. इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा antigenic determinants that distinguish one class of antibody from another are also located in this Fc. You can write 2 3 also, and this binds to complement system also, that is C1q to initiate classical pathway in your complement cascades. And this Fc region also bind to cell receptor, that is Fc receptor on phagocytic cells, and not only phagocytic cells, it also act on your NK cells and mast cells. These are various functions. एंड फिर क्या आता है हमारा लिमिटेड प्रोटीलाइसिस विथ एंजाइम पेप्सिन. पेप्सिन के हिसाब से वो क्या होता है, निसोनॉफ एक साइंटिस्ट, तो व्हेन ही ट्रीटेड इम्यूनोग्लोबुलिन विथ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम pepsin, the immunoglobulin is cleaved into a large fragment designated as Fab2 fragment, which consists of 2 covalently linked Fab fragments, and the remaining Fc fragment is quickly degraded by pepsin into numerous small peptides. जो भी हमारा pepsin में जो हमारा immunoglobulin itself is a amino acid bonding, so that's degraded by pepsin into numerous small peptides and leave a dimer of C-terminal quarter called PFC fragment. Then क्या आता है हमारा in limited proteolysis with reducing agents. तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है गेरल्ड एडलमैन. he treated the immunoglobulin with reducing agents such as mercaptoethanol. एक होता है reducing agent mercaptoethanol, and he used that in the presence of urea. And what he says, he saw that the disulfide bonds are cleaved due to reduction, and the immunoglobulin was dissociated with 4 peptide chains. Here you can see his reaction. See, he treated immunoglobulin with pepsin and reducing agent mercaptoethanol, and what happened is, see,
Here two fab fragments, hinge region, and these peptides are again broken into pieces, degraded. And here is two H chains, two L chains, plus यहाँ पे एक sorry एफडी रीजन जो होता है और इसमें टू फैब फ्रेगमेंट्स बनते हैं and here this is the whole immunoglobulin he have taken and it is the degraded and see here he have taken the enzyme papain and reducing agent is the mercaptoethanol and he have taken pepsin to degrade the peptide all peptide present in the that chains. So, what here happened? Gerald Edelman in 1960, when he, treated with immunoglobulin with reducing agents such as mercaptoethanol. Here, one thing I have left here, urea is also used, but it is not written there. The book where I have taken. And mercaptoethanol in the presence of urea, the disulfide bonds are cleaved due to reduction, and immunoglobulin was dissociated into four peptide chains and for further addition of alkylating agents such as iodoacetate and what this do is this iodoacetate prevents the reassociation of peptides into the intact immunoglobulin. ये जो आयोडोएसिटेट हम क्या यूज़ किए वो क्या किया जो हमारा रीएसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड होता है फिर से वो जुड़ेगा तभी तो वो फुल इम्यूनोग्लोबुलिन बनेगा ना वो रीएसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड्स को बंद कर देता है ताकि और एक इंटैक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ना बन पाए and this is the diagram. So this is all about the session. If you find this video interesting, then please like, share and subscribe my channel, and if you are new to my channel, please go for other videos in my channel. You will definitely love it. So this is all about today. Thank you. Please subscribe it.